Hello everyone. So we are going to start with our new chapter of the class 10 science one, that is the refraction of light. So let's get started with the interesting chapter, that is the refraction of the light. Previously we have studied about the reflection of the light. So for that basics we have given here in the can you recall section. So we will be looking with that first. What is meant by the reflection of the light? What are the laws of the reflection? We have seen that generally light travels in a straight line. Because of this, if an opaque object lies in its path, a shadow of the object is formed. We have also seen in the previous classes how this shadow changes due to the change in relative positions of the source of light and the object. But light can bend under some special circumstances as we will be seeing below. So, यहाँ पर कहा गया है कि लाइट जनरली जो है लाइट की जो प्रिंसिपल है दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ मतलब वो बेंड नहीं होती एंड बिकॉज ऑफ दिस इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट लाइज इन इट्स पाथ अ शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म और यहाँ पर जो ओपेक ऑब्जेक्ट है एज वी ऑलरेडी नो अबाउट दिस दैट देर आर द three different types of the objects which we can observe in our surrounding. So first one is that is the transparent object. पहला जो है वो ट्रांसपेरेंट है ट्रांसपेरेंट देन दैट मीन्स द लाइट that which will fall on that particular object that is which is transparent, so the light will gets completely transfer from that ओपेक ऑब्जेक्ट जो है उस पर लाइट जब फॉल होगी सो लाइट गेट्स ट्रेस्ड बैक दैट मीन्स लाइट गेट्स डज नॉट गेट्स completely pass through that particular object, that is the opaque object. And third one is the translucent object. Translucent object is the object in which the light gets passed partially. मतलब पहला जो टाइप का ऑब्जेक्ट है दैट इज द ट्रांसपेरेंट जिसमें लाइट कंप्लीट पास हो जाएगी. सेकंड वन इज द ओपेक ऑब्जेक्ट. ओपेक ऑब्जेक्ट पे लाइट फॉल होने के बाद वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, वो पास नहीं होगी उससे. और थर्ड जो है वो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट दैट मीन्स द लाइट गेट्स पास पार्शियली, मतलब सम पार्ट ऑफ द लाइट वहां से पास हो जाएगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से और सब रिफ्लेक्ट हो जाएगा. So we have also seen in the previous classes how this shadow changed due to the change in relative positions of the source of the light. और जो हमने रे के डायग्राम्स देखे थे. So according to that diagrams, so we have studied about the change in the position of the light will change the relative positions of the shadow. But light can bend under some special circumstances as we will be seeing below. और जो light कुछ circumstances change हो जाने के बाद under some special circumstances light will change its path. तो वो क्या है? That is only the refraction of the light which will be studying in this chapter. तो देखते हैं आगे रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट. सो यहाँ पर एज यूजुअल हमें एक एक्टिविटी दी गई है. क्या है एक्टिविटी देखते हैं. ट्राई दिस करके एक सेक्शन है. मटेरियल ग्लास. एक ग्लास लेना है, 5 रुपये कॉइन लेना है, पेंसिल, मेटेलिक वेसल लेना है, एक्सेट्रा. सो सबसे पहले एक्टिविटी वन और एक्टिविटी टू दी है. एक्टिविटी वन क्या है? टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास एंड फिल इट विथ वाटर. Dip some portion of the pencil vertically in water and observe the thickness of the portion of the pencil in water. Now keep the pencil inclined to the water surface and observe its thickness. Activity 2 क्या है? Keep a 5 rupee coin in a metallic vessel. Slowly go away from the vessel. Stop at the place when the coin disappears. Keep looking in the direction of the coin. Ask a friend to slowly fill water in the vessel. You will be able to see the coin once the level of the water reaches a certain height. Why does this happen? सो दीज आर द टू सिंपल एक्टिविटीज विच वी हैव टू परफॉर्म. और इस एक्टिविटी से हमें यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट का जो प्रिंसिपल है वो हमें स्टडी करना है. क्या यहाँ पर जो कंक्लूजन है, क्या निकल के आ गया. In both the cases the portion of the pencil inside water appears to be thicker than the portion above the water. In the second case the pencil appears to be broken near the surface of the water. मतलब जो पहले जो पार्ट है, पहली जो एक्टिविटी हमने परफॉर्म की वो पेंसिल वाली, सो वी कैन सी दैट द पेंसिल अपीयर्स टू बी ब्रोकन.
और 5 रुपए का कॉइन जो है वो रेज्ड दिखाई देता है वाटर लेवल से। सो ऐसा क्यों हुआ? व्हाट वाज द प्रिंसिपल व्हिच वाज एक्टिंग बिहाइंड दिस एक्टिविटी? सो इन बोथ द above activities the observed effects are created due to the change in the direction of the light while coming out of the water। मतलब जो लाइट वाटर से जो आ रही है, out of coming from the light which is coming out of the water, so due to which the light changes its path. So light changes its direction when going from one transparent medium into the another transparent medium. This is called as the refraction of the light. So this is the important definition with the exam perspective also, कि एंड दिस इज ओनली द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। मतलब लाइट जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब ट्रेवल करती है, जब तो उसका पाथ जो है वो चेंज हो जाता है। सो दिस इज ओनली कॉल्ड एज द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं द बेंडिंग ऑफ द लाइट फ्रॉम changing from the one transparent medium to the another transparent medium, that is only called as the refraction of the light। so यहाँ पर क्या हुआ ये एक्टिविटी में? सो एक्टिविटी वन में हमने क्या किया था? हमने एक ट्रांसपेरेंट ग्लास फिल विद द वाटर लिया था। मतलब एक ग्लास लिया और यहाँ पर इस ग्लास में यहाँ पर वाटर था, बराबर? सो और जो पेंसिल थी वो हमने यहाँ पर डिप की रख डाली थी। सपोज दिस इज द पेंसिल विच इज इंसर्टेड, और हमें यहाँ पर पेंसिल जो थी वो ब्रोकन दिखाई दे रही थी, लेकिन एक्चुअली द पेंसिल वाज नॉट ब्रोकन, बट इट अपीयर्स टू बी दैट द पेंसिल इज टू बी ब्रोकन। सो दिस वाज हैपनिंग बिकॉज यहाँ पर हम जो देख सकते हैं एक ट्रांसपेरेंट मीडियम यहाँ पर जो एक्ट कर रहा था, दैट इज द एयर, and एक और transparent medium, that is the transparent glass which we have taken, and we have taken the water inside it। so this was the second transparent medium which was acting। so हमने यहाँ पर देखा कि हमें जो पेंसिल वो ब्रोकन अपीयर हो रही थी बिकॉज द लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम द वाटर टू द एयर, दैट मीन्स द फ्रॉम द वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू द अनदर ट्रांसपेरेंट medium, due to which we feel that the light that the pencil is to be broken। और यही जो प्रिंसिपल है, दैट इज व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम द ट्रांसपेरेंट मीडियम फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू द अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, इट इज कॉल्ड एज द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। सो एक्टिविटी 3 हमें यहाँ पर दी गई है। कीप अ ग्लास स्लैब ऑन द ब्लैंक पेपर एंड ड्रॉ इट्स आउटलाइन PQRS एज शोन इन द फिगर 6.1। जो भी प्रोसेस यहाँ पर दी है, दैट वी कैन परफॉर्म। थैंक यू आदेश फॉर आस्किंग। मैं बढ़िया हूँ, बट लेकिन अभी हम फोकस करते हैं कि दैट वी शुड फोकस ऑन द स्टडी। और अगर आपको कुछ डाउट होगा तो देन यू कैन आस्क इन द कमेंट आल्सो, बट वी विल बी मेजरली फोकसिंग ऑन द लर्निंग पार्ट। सो हमने अब तक देख लिया कि इन बोथ द एक्टिविटीज द ऑब्जर्व्ड इफेक्ट्स, ये हमने जो रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट का जो प्रिंसिपल था वो हमने स्टडी कर लिया। आगे जो एक्टिविटी 3 है, तो एक्टिविटी 3 में हम क्या उन्होंने क्या कहा गया है वो हम देखते हैं। कीप अ ग्लास स्लैब ऑन द ब्लैंक पेपर एंड ड्रॉ इट्स आउटलाइन PQRS एज शोन इन द फिगर 6.1। 6.1 फिगर में जो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक ब्लैंक पेपर लेना है और आउटलाइन ड्रॉ करनी है PQRS एज शोन हियर। Draw an inclined straight line on the side PQ so that it intersects PQ at the end. Pierce two pins vertically at 2 points A and B along the line. Look at the pins A and B from the opposite side of the slab and pierce pins C and D vertically so that the images of the A and B are in the line with the C and D. Next, now remove the chip and the pins and draw a straight line going through the points C and D so that it intersects SR at the end. Join points M and N. Observe the incident ray AN and emergent ray MD. The first refraction occurs when the light ray enters the glass from the air at N on the side PQ. The second refraction occurs when the light enters air through glass at the point M on the side SR. From the first refraction, the angle of incidence is I, while from the second, it is I1. Angle of refraction at the end is R. सो यहाँ पर जो है वो सिंपल एक्टिविटी जो हमें दी गई है, दैट वी हैव टू टेक वन ब्लैंक पेपर और
उसको हमें आउटलाइन मार्क करनी है PQRS, देन वी हैव टू टेक द ग्लास स्लैब, और जो यहाँ पर पिंस अटैच हमें करनी है, एंड वी हैव टू सी फ्रॉम द डिफरेंट पोजिशंस, फ्रॉम द डिफरेंट एंगल्स, दैट हाउ द पिंस टू बी अपीयर। सो हम जब देखते हैं, सो यहाँ पर हमें जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइट एंटर हो रही है, दैट इज फ्रॉम द एयर मीडियम। यहाँ पर एयर मीडियम है, और यहाँ पर जो है वो ग्लास है। सो एयर से जब लाइट ग्लास में आ रही है, दैट मीन्स फ्रॉम द वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो यहाँ पर क्या होगा, लाइट विल चेंज इट्स पाथ, एंड दैट इज ओनली द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, जो कि प्रिंसिपल हमने ऊपर देख लिया। सो यहाँ पर लाइट का बेंडिंग सिर्फ क्या जब लाइट एयर से ग्लास में आ रही है, क्या तभी हमें दिखाई पड़ता है? No, not that at all. So we can also see the bending of the light, the refraction of the light when light will fall back from the glass to the air medium. That means जब light air से glass में आ रही है, that time one refraction. Then from the glass to the again air, that is the another refraction. So we are can able to see here the two different refractions, and we can able to see that लाइट जो है, अगर हम वो जो प्रिंसिपल फॉलो करते हैं कि लाइट ट्रेवल्स ओनली इन द सिंगल लाइन पाथ, तो लाइट को जाना कैसे चाहिए था, दैट लाइट शुड फॉलो दिस पाथ, बट लाइट यहाँ पर बेंड हो गई, देन लाइट अगेन यहाँ पर बेंड हो गई। सो दिस इज ओनली द प्रिंसिपल दैट इज द ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट विच वी कैन सी हियर। हेलो आयुष, हेलो एवरीवन। आगे देखते हैं कि note that I1 is equals to R. The second refraction, the angle of refraction is E, which is equal to I on both the parallel sides PQ and RS of the glass slab. The change in the direction of the light ray is equal but in the opposite direction. Thus, the light ray MD emerging from the glass slab is parallel to the incident ray AN on the side PQ of the slab, but the emergent ray is somewhat displaced with respect to the incident ray. और जब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो I1 है और जो R है, ये एंगल्स जो है ये सेम है, दीज आर टू इक्वल्स। और जो यहाँ पर द लाइट रे एमडी इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लास स्लैब इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे एन ऑन द साइड पीक्यू ऑफ द ग्लास स्लैब, और जो यहाँ पर एमडी जो इमर्जिंग रे है, दैट दिस इज द इमर्जिंग रे विच वी कैन सी हियर, और यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है, दैट इज द एंगल ऑफ द इमर्जेंस विच वी कैन सी हियर। और एन के जो पैरेलल हम यहाँ पर देख सकते हैं, दैट वी कैन सी हियर, दिस इज वन लाइन, और यहाँ पर ये एक जो लाइन है। सो these two lines are the parallels which the conclusion which we have drawn here. This activity is also important as it may ask in the exam with the perspective that from this above activity we have to they may ask about the explanation for the refraction of the light, that how the refraction of the light is occurring from this activity. So simple है, जो हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किया, जो मैंने आपको बताया, that is the refraction is occurring at the two points, that is when the light enters from the air to the glass medium, and when the light goes from the glass to the air medium, that two refraction is occurring. And आप यहाँ पर explain कर सकते हैं कि that is the angle of the refraction, that is the R which is formed here, and the I1 they are both two equals, और जो AN है वो parallel है emergent ray MD के। That is a simple explanation which we can easily explain in the exam also. So Ayush, uh, so everyone, जो आपके comments है, that I will be answering at the last of this live session, that my major focus is on the teaching part now currently.
अगर आपको इससे रिलेटेड जो कंटेंट है अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ डाउट होगा, देन यू कैन आस्क इन द लाइव चैट, सो आई कैन टेक दैट डाउट। बट जो आपके सवाल होंगे, दैट वी विल बी ट्राई टू आंसर एट द लास्ट। सो मतलब जो पढ़ाने का जो फ्लो है, अगर उसमें उसमें डिस्टरबेंस ना आए, दैट इज द ओनली मेजर थिंग। सो कमेंट्स और विच वी कैन टेक एट द लास्ट। बट अगर आपको जो पढ़ाया पढ़ाया जा रहा है, अगर उसमें कुछ टॉपिक में रिलेटेड डाउट है, देन यू मे आस्क इन द लाइव चैट। तो अभी फोकस करते हैं कि जो कंटेंट है वो पहले हम समझ लेते हैं। इन दिस लाइव वी विल बी सीइंग अप टू मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वो जो है, सो हम यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट जो तीन डिफरेंट लॉज है वगैरह, वो रूल्स हम सब यहाँ तक पढ़ लेते हैं। देन वी विल बी जो ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स जो है, दैट वी विल बी सीइंग इन द नेक्स्ट पार्ट। सो चलिए आगे देखते हैं। Use your brain power. Will light travel through a glass slab with the same velocity as it travels in the air? Will the velocity of the light be same in all the medium? So these are the two questions. क्या जब लाइट ट्रैवल कर रही है ग्लास स्लैब में विद द सेम वेलोसिटी एज इट ट्रैवल्स इन द एयर? तो ऐसा तो नहीं होगा, एज द मीडियम विल चेंज, वेलोसिटी ऑफ द लाइट विल आल्सो चेंज, as we can say here. Velocity, will the velocity of the light be the same in the medium? ये आगे हम देखेंगे। We are having one table there, we can see about that. What is the refraction and how the refractive index affects as the medium changes? Laws of the refraction क्या है? So let us study light ray entering a glass slab from the air as shown in the figure 6.2. Here AN is the incident ray and NB is the refracted ray. AN जो है वो incident ray और NB जो है वो refracted ray. Incident ray and refracted ray at the point of the incidence n are on the opposite sides of the normal to the surface of the slab at that point, that is CD. And the three incident ray, refracted ray and the normal are in the same plane. So ये जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, पहला लॉ क्या यहाँ पर कहता है कि इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस एन। सिंपल है यहाँ पर। सॉरी। सो इंसिडेंट रे जो यहाँ पर ए एन है और जो रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पर एन बी है। सो यहाँ पर जो दो रेज जो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या कहा गया है यहाँ पर, इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस एन। मतलब जो एन जो है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है यहाँ पर। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज दैट वेयर द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे वी कैन एक्चुअली सी दैट दे आर मीट, so are on the opposite sides of the normal to the surface of the slab at the point CD. और जो CD यहाँ पर जो नॉर्मल है इसको, so we can see here AN और NB जो है that are on the opposite side of the normal. So we can see here that the three incident ray, refracted ray and the normal are in the same plane. प्लेन क्या होता है? अगर यहाँ पर वापस एक कंसेप्ट आता है, so what is the plane? Suppose यहाँ पर मैंने एक डायग्राम ड्रॉ की है रैंडमली। सो लेट्स आई एम अज्यूमिंग दैट इट इज लेबल्ड एज ए बी सी एंड डी अप टू नाउ। ओके। सो सपोज यहाँ पर डिफरेंट रेज हैं जो कि यहाँ पर इस सरफेस में पड़े हुए हैं। एक सिंपल आपको एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ। सपोज आई एम हैविंग दिस बुक। ये बुक के यहाँ पर जब हम देख सकते हैं कि सपोज आई एम हैविंग दिस पेन, और ये पेन जो है, सपोज इट इज प्रेजेंट एट ऑन दिस सरफेस ऑफ दिस बुक। सो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट दिस पेन इज लाइंग ऑन दिस सरफेस, दैट मीन्स ऑन दिस प्लेन। सो यहाँ पर अगर ये पेन अगर ऐसा यहाँ पर मतलब बुक के सरफेस को छोड़ के अगर दूसरे इसमें पड़ा होगा, सो वी कैन नॉट से दैट द पेन इज इन द plane of that with the surface. So plane क्या है? So suppose there are the different objects which are present here. Suppose rays है, the so different rays are present, और जब ये rays
एक सरफेस पर्टिकुलर एक बाउंडेड सरफेस में प्रेजेंट होंगे, सो वी कैन से दैट दे आर इन द सेम प्लेन. So this is the plane consent. So from this we can say that incident ray, refracted ray, and the normal are in the same plane. This is the first law of the refraction, and the laws of the refraction are the most important. So we have to remember this, that this will be asked definitely in major many exams also. So it is also important with the exams perspective, and also for the solving of the numericals also. So for a given pair of the media, here air and glass, the ratio of the sin I to the sin R is a constant. Here I is the angle of the incidence and R is the angle of the refraction. मतलब यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं वो देख लेते हैं. That is the ratio of the sin I. अरे लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर पहले से ही दिया है. That is the ratio of the sin I to the sin R is always constant, and this is only called as the Snell's law. क्या है? N is the called as the refractive index of the second medium with respect to the first medium. This second law is also called as the Snell's law. A ray incident along the normal I is equals to 0 goes forward in the same direction R is equals to 0. This is the simple Snell's law. And this Snell's law is only the second, that is the laws of refraction. नेक्स्ट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? अब तक हमने देख लिया रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन, बहुत रिफ्रैक्शन हो गया. लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द अगेन वन ऑफ द मेजर पार्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे. दैट विल बी द आंसर टू दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसेप्ट. द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट रे व्हाइल एंटरिंग डिफरेंट मीडिया इज डिफरेंट. मतलब change in the direction of light ray as from the principle of the light should always go on the straight line path. लाइट कभी बेंड नहीं हो सकती, ऐसा जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो लॉ है वो कहता है लाइट डज नॉट बेंड, लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन पाथ. लेकिन जो चेंज इन द वेलोसिटी, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट रे व्हाइल एंटरिंग फ्रॉम द डिफरेंट मीडिया इज डिफरेंट. यहाँ पर जो कहता है दैट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट. So, it is related to the refractive index of the medium. The value of the refractive index is different for different media and also for the light of the different colors for the same medium. The refractive indices of the some substances with respect to the vacuum are given in the table. The refractive index of the medium with respect to the vacuum is called its absolute refractive index. और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, so refractive index of the medium with respect to the vacuum, it is called as the absolute refractive index. This may ask in the complete the following. So that's why I am telling you about this. Keep in mind the refractive index of the medium with respect to vacuum. It is called as the absolute refractive index. Refractive index depends on the velocity of the light in the medium. और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिपेंड करेगा वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द मीडियम. मीडियम के यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी लाइट की, that on that only the refractive index will be depending. So we are given here एक thing है, the refractive indices, कहाँ गया? The value of the refractive index is different for the different media and also for the light. और refractive index कैसा लिखा जाता है? The refractive index of the medium with respect to vacuum, or the refractive indices of substances with respect to vacuum are given in the table. So we are given the different refractive indices of the various different other substances. एयर का है, आइस, वाटर, अल्कोहल, केरोसिन. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हर सब्सटेंस का अलग अलग है. Don't worry, when the refractive index is question will be asked, so majorly the that refractive index of that particular medium will be mentioned in the question. But keep in mind the refractive index of the air is 1. This is only, and diamond का यहाँ पर सबसे ज्यादा है, that is 2.42. Let the velocity of the light in the medium 1 be v1 and in the medium 2 be v2 as shown in the figure 6.3. Refractive index of the second medium with respect to the first medium n21. यहाँ पर जो गलती होती है दैट इज जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो लिखना होता है दैट इज द डिनोशन पार्ट. यहाँ पर मेजरली जो मिस्टेक जो ऑब्जर्व होती है दैट इज
सो ये ना हो, सो व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। मतलब लिखना कैसा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज एन ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। Keep in mind the denotion as it is important, that is refractive index of the second medium with respect to the first medium is equal to the ratio of the velocity of the light in the medium 1 to that in the medium 2। मतलब जो refractive index of the second medium with respect to the first, that is velocity of the light in the medium 1 v1 and velocity of the light in the medium v2। सिंपल सी ट्रिक है इस फॉर्मूले को रिमेम्बर करने की। देखिए, n लिख दीजिए 1 2, कब, जब पूछा गया होगा सेकंड मीडियम पहले और फर्स्ट बाद में। जब सेकंड पहले होगा उसको नीचे लिख दीजिए, और फर्स्ट बाद में होगा देन उसको ऊपर लिख दीजिए। इट इज सिंपल। और ये क्या है, विथ वेलोसिटी ऑफ द लाइट v1 अपॉन v2, और v1 v2 लिखते समय 1 पहले 2 बाद में। सिंपल। सो सिमिलरली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, ये कैसे लिखा जाएगा, मीडियम 1, मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 विच इज गिवन बाय, यहाँ पर 2 पहले है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी 2 और वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द मीडियम 1। दिस इज सिंपल। सो if the first medium is vacuum, then the refractive index of the medium 2 is called as the absolute refractive index and it's written as the n. If the refractive index of the second medium with respect to the first medium n to 1 and the third and that of the third medium with respect to the second medium, that is n to 3, and what and how is n 3 1? Simple. So rarer medium, denser medium, rarer medium, यहाँ पर जो तीन different rules which we are following for the drawing the diagrams of the refraction of the light. So यहाँ पर जो तीन rules है वो हम देखते हैं। रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जब लाइट ट्रेवल करती है, डेंसर टू रियरर, और डेंसर और रेयरर मीडियम के बीच। सो पहला रूल क्या है, व्हेन अ लाइट रे passes from the rarer medium it bends towards the normal। मतलब लाइट जब रेयरर टू डेंसर जब ट्रेवल करेगी सो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल क्या है यहाँ पर, सो नॉर्मल यहाँ पर ये जो जिसके अपोजिट साइड में जो इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड रे लाई करती है, दैट इज नॉर्मल। सो व्हेन अ लाइट रे passes from the rarer medium to a denser medium it bend towards the normal। इसको ध्यान में रख लो, बिकॉज these three rules which will be most important for the drawing of the refractive diagrams, जो हमने रिफ्लेक्शन के डायग्राम्स जो पढ़े थे। so this will be the refraction diagrams which will be seeing that when the source is at the some point। so यहाँ पर नहीं दिया है लेकिन वो हम पढ़ेंगे। When the light ray passes from the denser medium to the rarer medium, it bends away from the normal। Denser से rarer में जाएगा, bend away from the normal। This is the second rule। और third है, when the light ray is incident normally at the boundary between the two media, it does not change